वेलकम टू टुडेज वैल्यू टॉक। आज की वैल्यू टॉक जो है वो बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक पे है। दैट इज इट्स गोइंग टू बी अ वर्कशॉप ऑन रिटायरमेंट कॉर्पस इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस, जो कि आई थिंक काफी लोगों के लिए रेलिवेंट है, स्पेशली पीपल ऑफ माय एज ग्रुप। एंड फॉर दिस वैल्यू टॉक it will be conducted in a role play mode. For the purpose of this value talk, I am Colonel Manish, Kochhar, retiring with 1 crore or corpus. My age is 55 years. I own a house already, and I have 2 children. One of them is married and working, and my younger child is his education is completed, working, and plans to marry in another 4 to 5 years. So we have 2 experts with us today, Captain Vipul Choudhary and Jitender, and both of them you already know. They have been featuring on our value talks regularly, and they are experts in their field. I will come out with my investment objectives, which I have sent to these experts. I plan to marry my younger child in 4 to 5 years. I will be having a steady income of, in addition to pension. I want something from my investment so that I have some steady income in addition to my pension. Safety of the corpus is topmost, and liquidity should be there. It should not be that my corpus is stuck and when I need the money is not available. Especially for the goals which are called happiness goals. Some purchases, travel. I want to travel, a fancy vehicle or a reasonably okay vehicle. And I also want to draft my will and do estate planning, so that in case something happens, my family is not left in a lurch. So with these objectives, Vipul and Jitin, I would like you to advise me what is the plan. So I'll say, Jitender, please share the worksheet, and that's how let's start. First of all, good evening to Colonel Kochhar, Captain Vipul, and all the participants. It's a privilege to be part of this initiative, and the idea would be to share our experience with you while working with so many clients of ours, and we'll try and kind of capture and address all the questions which Colonel Kochhar has kept in front of us. So let me share my screen with you. We'll do it live. So there's an Excel sheet. We'll do it live. I think because some of the people have joined little late, I would once again repeat my profile. This workshop we are conducting in role play model. I am playing the role of Colonel Kochhar, who is retiring very shortly and will be having a corpus of approximately 1 crore. My age is 55 years. I own a house already, which is purchased and paid for. I have 2 children. One of them is married and working. The other one is working and likely to be married in next 4 to 5 years. And my investment objectives, what I have sent to these experts is marriage of younger child in 4 to 5 years, steady income in addition to the pension, safety of the corpus topmost, liquidity liquidity of money, so that when I need money, it is available to me for impulse purchases, travel, vehicle, etc., and will drafting and estate planning. These are the objectives which I have sent to these experts. Thank you, Jitin. Thank you. Sorry, the time is short and there is a lot to be covered, so I started straight away. No issue, sir. I hope my screen is visible. Yes, it is. So we'll start filling up the details, and I'll ask Colonel Kochhar to help me. Sir, age is 55. Yes. Spouse age? 53. And I'm assuming she is dependent on you. She's not earning. She doesn't have a. She's not earning. She's not earning.
28. Sorry, What is the age of your elder child, sir? Elder son? 28, And the younger one? 23. Okay. So there is only one dependent. Life expectancy, I'm assuming 80 years. For the younger one's marriage, what is the amount we are looking at in today's value? आज की डेट में क्या खर्चा सोच के चल रहे हैं? That's a tough question, but at least 30-40 lakhs is. For the sake of this workshop, let's take it at 20 lakh rupees. Okay. 20 is done. And after 4 years, with an inflation of 8%, so the value or the corpus that we'll be requiring after 4 years would be 27 lakhs, not 20. So this would get inflated because of the Mengai. So, and for the retirement, sir, if I can ask you, what is the money that you're looking to spend every month post retirement? मतलब हर महीने क्या खर्चा होता है? Or the income that you're looking at post retirement? I'm looking at 1.3, 1.4. I mean, ideally, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है वैसे तो. लेकिन my expenditure is post retirement, like, yeah. 1.3. Yeah, 1.3. So in today's value, this would be about 15.6 lakh rupees every year. Right. अभी आपने कॉर्पस बताया about 1 crore. Yeah. Okay. So just a glimpse of it, sir. For your younger one's marriage, you need to provision out of this 1 CR about 17 lakh rupees. I hope this is visible to you. I'll in fact increase the size. So this section of this cell, 17.29 lakh rupees you need to spare for your kids' marriage right away. And the balance 82 goes for your retirement planning. Right. So Okay. assumptions. Yeah. So okay. I'll share the assumptions. Assumptions is inflation. I've kept it at 8%. Right. And the return that we are targeting is 12% per annum. Okay. So for this, to achieve this goal, if we put 17 lakh rupees today in 2022, by the time the goal arises after 4 years, we'll be having that corpus of 27 lakh rupees with us for your younger son's younger kid's marriage. So I hope how I am going to achieve this 12% you're going to tell me. Yes, I'll give you the breakup, sir. In fact, for the entire portfolio, not only for your kids' education, for the marriage, for retirement as well. So I hope this is clear, sir. Right. So now we'll go to the portfolio mix, and this I shared in my earlier workshop also. So if we'll be investing 1 CR, there are basically 2 ways. One is basis your age. The second one basis your risk profile. So पहले age की बात कर लेते हैं. Since you are 55, so ideally this should be the breakup. The first section that you see, age-based investment portfolio mix. I'll try and increase the size again. Is it visible, sir? Yeah. तो मोटा मोटा अगर बात करें तो 1 करोड़ में से तकरीबन 45% पैसा जाएगा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में, रियल एस्टेट में, या दोनों के अंदर. किसी एक में भी जा सकता है और दोनों में भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन विच इंस्ट्रूमेंट्स वी आर कीन ऑन इन्वेस्टिंग इन. मतलब हमारे को जो ज्यादा सुटेबल लगेगा हम दोनों भी कर सकते हैं या किसी एक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो ऑलमोस्ट 45% मनी गोज इनटू इट. अराउंड 27% गोज इनटू बॉन्ड्स एंड डेट फंड्स, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं कैपिटल को प्रोटेक्ट भी करके रखना है. मैं सारा पैसा रिस्क वाली एसेट क्लासेस में नहीं डाल सकता हूँ जहां पर वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट होता है. तो काफी कुछ पैसा हम लोग डेट में भी डाल के रखेंगे जहाँ पे कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे और एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें मिलता रहे. तकरीबन 14% पैसा जा रहा है, 13.75 टू बी प्रिसाइज, इनटू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स. एंड दिस वुड नॉट बी डिप्लॉयड लमसम. मतलब ऐसा नहीं कि मैं आज आपसे ये पैसा लेके सारा का सारा उठा के आज की डेट में जहाँ की मार्केट इतना वॉलेटाइल है इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा और पता चला यहाँ से मार्केट करेक्शन में चला गया and we'll see our money going into that. तो ऐसा नहीं होगा. This money would be invested slow and steady. So over the period of time थोड़ा करके पैसे को इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाएगा. बाकी बचा हुआ 14% पैसा जाएगा बैंक की एफडीज या सेविंग अकाउंट में. ये मेरे लिए कंटिजेंसी का काम करेगा.
अगर मुझे कभी कोई ऐसी जरूरत पड़ी जिसके लिए मैंने प्लान फॉर या अकाउंट फॉर नहीं कर रखा है, so this money would be my first corpus to go for. So any kind of situation wherein I need immediate money, this is the first bucket which I'll be using. So Ideally, that means, जी sir. so एक बारी आप, so basically we are planning that 79 lakhs rupees, right? 27 we have already kept for. नहीं सर, वो ओवरऑल टोटल पोर्टफोलियो ऑफ 1 CR, जिसमें से चाइल्ड की जो मैरिज है वो भी इसी में ही हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया है, और आपकी रिटायरमेंट का जो कॉर्पस है वो भी. So ये पूरा पोर्टफोलियो है. This portfolio takes care of both the things, the marriage as well as your retirement. Can you just repeat what is the percentage, please? Percentage for this is your age-based portfolio. So I'll come to risk profile-based portfolio also. So on the basis of age, अगर सिर्फ thumb rules के ऊपर बात करते हुए पोर्टफोलियो बनाए तो ये नंबर्स निकल कर आते हैं. हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स रियल एस्टेट में तकरीबन 45%, 45%. So approximately 45 lakh rupees. Okay, ठीक है. बॉन्ड्स में, डेट फंड्स में या फिक्स्ड रेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर अगर जाएं तो तकरीबन 27% पैसा, यानी 27.5 लाख रुपीस. Okay. Approximately 13.75 lakh rupees into equity mutual funds, and this will majorly be large caps and multi caps, no small caps, no mid caps, no funds with too much volatility and aggression. So this would be portfolio which is equity based but very stable. Okay. और बाकी बचा हुआ मतलब 13.75 लाख रुपीस into your bank FDs and saving account. Okay. So a total of 1 CR invested for both the goals, and the expected returns on this complete portfolio post tax returns. And यहाँ पे assumption ये है कि आप 30% slab में जा रहे हैं तो 30% टैक्स दे के, या फिर जो इक्विटी का टैक्स है और जो डेट का टैक्स है वो टैक्स पे करने के बाद 10.35% का हमारा रेट ऑफ रिटर्न निकल कर आना चाहिए इस पोर्टफोलियो पे. आफ्टर टैक्स कितना रिटर्न आएगा? 10.35. Okay, right. Since these are different instruments taxed at different rates, तो सब कुछ कैलकुलेशन करके 10.35 पोस्ट टैक्स रिटर्न आपके पास आना चाहिए इस पोर्टफोलियो पे. Okay. Let's and what is the other method of calculating? This was age based. This was age based. So here what we do is we basically consider your age as main factor, and on the basis of that we decide the split of the portfolio कि कितना equity रखना है, कितना debt रखना है, कितना real estate रखना है, and on the basis of that we decide the portfolio का composition. So जितना कम age होगा equity का exposure उतना ज़्यादा होगा, जितना age बढ़ता जाएगा equity exposure कम होता जाएगा. So just मतलब broadly अगर मैं इसको देखूं तो आपका इक्विटी का जो एक्सपोजर है वो 45 प्लस 14%. तो इट्स, आई मीन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स 45%, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स जो है, एंड देन इक्विटी म्यूचुअल फंड इज 13.75%. जी. So it's approximately almost 50% of the corpus has gone into this. नहीं सर, एग्जैक्टली अगर देखें तो 45 लैक्स जो या 45% हम हाइब्रिड में बात कर रहे हैं. हाइब्रिड के अंदर कैन बी 50-50 पोर्टफोलियो इटसेल्फ, मतलब इक्विटी डेट का 50-50 पोर्टफोलियो हो सकता है जिसमें 50% इक्विटी होगा, 50% डेट होगा. अच्छा. तो मैं ये मान के चल रहा हूँ हमने 50-50 में इन्वेस्ट किया तो इस 45 लाख का भी 50% डेट में है. तो मोटा मोटा बात करें तो तकरीबन 24-24.5 लाख रुपए तो इक्विटी हाइब्रिड में हो गया, और तकरीबन 14 लाख राउंड ऑफ कर लेते, 14 लाख अलग से हमने डाल दिया, तो तकरीबन हो गया हमारा 38.5 लाख का एक्सपोजर इनटू इक्विटी, which is approximately 40%, not 50%. And real estate and other instruments? Sir, real estate and other instruments, real estate मैंने हाइब्रिड के साथ क्लब किया है. हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं. Right. जैसे मान लीजिए हमें कोई अच्छा कमर्शियल एक एवेन्यू मिल जाता है, 20-25 लाख की इन्वेस्टमेंट है, अच्छा रेंटल यील्ड दे सकता है, तो मैं मे भी 25 लाख रुपए रियल एस्टेट में डाल दूंगा, 20 लाख रुपए हाइब्रिड फंड में डाल दूंगा, 45 लाख रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया. सो दे कैन बी लॉट मेनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है. Okay, understood. That means 45% is basically a combination of this. Combination of this और combination of maybe यहाँ पे अगर मान लीजिए ये तो अभी एज बेस्ड है, अभी मैं रिस्क प्रोफाइल बेस्ड भी डिस्कस कर लेता हूँ तो थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगा आपको. Right. जनरली
generally whenever I sit with a client, I am basically look at the risk profile based investment portfolio rather than age based, because वो ज्यादा sensible लगता है मेरे को कि जितना कोई risk ले सकता है उस हिसाब से portfolio बना दिया जाए. So Right. generally on the basis of risk profile, there are three categories of risk profiles which people belong to and the investors belong to. One is conservative. The category wherein the people are not ready to take too much of risk. वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ना volatility को झेल नहीं सकते. So there are certain investors who are very risk averse, जिनका कहना ये होता है कि मैं ना अपना कैपिटल इरोड होते हुए नहीं देख सकता. आप मेरे को रिटर्न चाहे 2-4% कम कर दो, बट मेरे को कैपिटल इरोजन नहीं चाहिए. मैं अपने 10 रुपए को 9 रुपए होते हुए नहीं देख पाऊंगा. जितेंद्र, सॉरी टू इंटरप्ट यू. मनीष सर, मैं यहाँ पे एक बात जो आपको ये बताना चाहूंगा कि ये रिस्क हेयर इज नॉट दैट योर कैपिटल वुड बी लॉस्ट, बट क्योंकि इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स आर लिंक टू मार्केट मूवमेंट. सो आज आपने मान लीजिए एक इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट किया थ्रू म्यूचुअल फंड and the underlying equities, because of some reason there might be a dip in the prices of those equities. So for that short term you might feel कि यार मेरा तो कैपिटल ही कम हो गया, मैंने वहां पे 40 लाख रुपए लगाए थे, आज तो 30 लाख दिख रहे हैं. तो कैपिटल कम नहीं हुआ है, वो व्यापार बंद नहीं हुआ है, लेकिन वोलेटिलिटी है. आज वो कम हो गया, आप 2 साल वेट करेंगे, हो सकता है वापस से रिबाउंड करके 60 लाख पर चला जाए. But there are a lot of people who get uncomfortable with this kind of a volatility in the Understood. market. Understood. Similarly, real estate. आपने आज 40 लाख का रियल एस्टेट खरीदा, हो सकता है कि 2 साल तक उसका रेट बढ़ ही नहीं रहा है, या आप मार्केट में खरीदने के लिए गए, किसी ने बोला कि ये तो 38 लाख में मिल रहा है. So it might give you a discomfort, a mental loss का feeling. So to avoid that, there are people who say we do not. We are very, very averse to volatility. What I can assure you is that whatever we are working on here, there is no speculative element. It is just that when we increase your exposure to either equity or to real estate for the short term implies anything from 3 to 5 years, or maybe even up till 8 to 10 years, depending on the kind of, like Jitender said, we will not put your money at your age in a mid cap or a small cap kind of a mutual fund, equity mutual fund. That is basically to reduce the volatility and also to make sure that at all given points in time, your principal is 100% safe. Jitendra, please continue. Sir. So coming back to the risk profile based portfolios, it is categorized under three categories. One is conservative investors who are looking at capital protection, and the risk that they are the return that they are targeting is not too high. मतलब उनका ये है कि मेरे को ना मार्केट में इन्फ्लेशन से थोड़ा सा ऊपर 1-2% रिटर्न दे दो, मेरे कैपिटल को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर दो, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ना जाए मेरा पोर्टफोलियो. तो उस तरीके का एक मिक्स बना के मेरा एक पोर्टफोलियो मैनेज किया जाए. तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इक्विटी में तो इक्विटी में एक्सपोजर कम रखते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में, क्योंकि ऑब्वियसली एसेट क्लास ऐसी है कि डेली बेसिस पे जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे जाता है, ये भी डेली बेसिस पे ऊपर नीचे जाती है, और काफी सारी ग्लोबल और डोमेस्टिक इवेंट्स का इस पे इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो उस रिस्क को रिड्यूस करते हुए हम लोग यहाँ एक्सपोजर कम कर देते हैं. तो अगर आप देखेंगे कंपेयर टू दी एज बेस्ड पोर्टफोलियो, दी एक्सपोजर टू हाइब्रिड एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड इज लेस. मतलब जहां वहां पे 40% था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 30% पे आ गए हम लोग. राइट. तो ऑब्वियसली रिटर्न भी कम हुआ है, बट हाँ कहीं ना कहीं सिंस हमारा ज्यादा पैसा एक्सपोज हो रहा है टुवर्ड्स फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ, जहाँ पे हम डेट फंड्स में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो कंपैरेटिवली रिस्क कम हो जाता है. दी वॉलेटिलिटी रिस्क रिड्यूसेस. तो तकरीबन रिटर्न भी उसी हिसाब से मोटा मोटा 9.7% पोस्ट टैक्स निकल कर आ रहा है इस केस में. So it is 9.7% versus 10.3 there. 3 and the main reason is because the exposure has changed from a higher risk return category to a lower or fixed return category. Right. तो जहां वहां पे ऑलमोस्ट हम लोग
bonds, debt funds और hybrid equity के debt category में almost 60% exposure ले रहे थे, यहाँ पे हमने बढ़ा के उसको 70% तक कर दिया. Right. If we come to the middle category, and most of us, and in fact this has been my experience, मैं अगर 100 लोगों को मिलता हूँ तो almost 85% लोगों का कहीं ना कहीं risk profile moderate ही निकल के चलता है. ना तो वो बहुत aggressive निकल कर आते हैं कि हाँ मुझे तो ना 100% equity में expose कर दो, या फिर मेरे को कोई बड़ी commercial property या residential property में 10 साल 15 साल के लिए invest कर दो. ऐसे जनरली प्रोफाइल कम मिलते हैं, ज्यादातर ऐसे ही होते हैं जो कहते हैं ठीक है थोड़ा सा चलेगा, कैलकुलेटेड चलते. सो इन दिस काइंड ऑफ अ कैटेगरी, जैसे आपने बोला इनिशियली, यहाँ पे कहीं ना कहीं चीजें 50-50 आ जाती हैं. सो 50% इनटू हायर रिस्क हायर रिटर्न कैटेगरी, जहाँ पे वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट ज्यादा दिखता है, वहीं वर्सेस बाकी पैसा जो है वो सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में जाता है जो कि आपको एक फिक्स रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं. तो यहाँ पे जो आपका रिटर्न निकलता है पोस्ट टैक्स वो तकरीबन 11.5% के आसपास हो जाता है. So that is moderate. Risk. That is moderate risk profile. Okay. Yeah. Okay. Wherein substantial money goes into equity and equity related instruments, real estate, and the balance goes into debt and debt related instruments, जहाँ पे fixed return 7-8% के आसपास हर साल का मिलता है. Right. And what about the liquidity of the capital, which I mentioned in the beginning? सर लिक्विडिटी के लिए अगर आप देखेंगे, मेरी ये जो कैटेगरी है स्पेसिफिकली दी बैंक एफडी एंड सेविंग्स अकाउंट, दिस इज 100% लिक्विड. दिस कैन बी विथड्रॉन एनी पॉइंट ऑफ टाइम. डेट फंड्स में भी लिक्विडिटी पूरी होती है. कुछ बॉन्ड्स हो सकते हैं जिसका मेच्योरिटी पीरियड हो सकता है कि 1 साल का बॉन्ड हो, 3 साल का बॉन्ड हो, तो वहां मेच्योरिटी सेक्रीफाइस हो जाती है. अदरवाइज देयर इज डिसेंट सा liquidity. Equity mutual funds are liquid. You can withdraw any point of time. The only issue can be the market valuations. अगर मार्केट ऊपर है तो अच्छा है निकालना, वरना अगर कभी ऐसी सिचुएशन है कि काफी करेक्शन आ चुकी है तो हो सकता है नेगेटिव में निकालना पड़े. लिक्विडिटी तो है, बट वो वैल्यूएशन पे डिपेंड करेगा इक्विटी के केस में कि कब निकालना है. एंड ऑब्वियसली द आइडिया ऑफ स्प्लिटिंग दिस मनी इनटू डिफरेंट एसेट क्लासेस इज टू क्रिएट अ मिक्स. तो जरूरी नहीं है कि मेरे को सारे पैसे की जरूरत एक साथ पड़े. तो पहला मेरा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा कि अगर मुझे बिल्कुल इमीडिएट कोई नीड है तो मेरा बैंक एफडी और सेविंग अकाउंट से पैसा निकलना चाहिए. उसके बाद और पैसे की जरूरत है तो बॉन्ड्स और डेट फंड्स में से निकलना चाहिए. I should ideally hold my equity mutual funds, real estate and hybrid for long duration, for at least for 5 years, 10 years, for as long as possible. Right. We'll just, for all those people who have joined late, I will just tell you again that for this workshop, I'm role playing as Colonel Manish, Kochhar, who's retiring shortly with a corpus of approximately 1 crore plus. And I'm 55 years of age with a house already purchased and paid for. I have 2 children. Elder children is married and working, and younger children is working and plans to be. I plan to marry him off in next 4 to 5 years. The investment objectives which have been given is marriage of younger children in 4 to 5 years, steady income in addition to the pension, safety of the corpus, liquidity to meet the happiness goals like impulse purchases, travel, a fancy vehicle, and will and estate planning. And I am talking to, this is what I have sent to these experts, and our experts are Captain Vipul Chaudhury, who is an MBA Finance and alumni of MDI Gurgaon, and Jitender, who's expert in mutual funds and SEBI registered, and he is an alumni of IMT Ghaziabad. Am I right, Jitendra? Institute of Management Research, sir, to correct that, sir. Right. IMR. Yeah. IMR, sorry. Yeah. So, till now we have discussed age-based investment, in which Jitendra gave me approximately 10.3% returns with adequate safety and all. And sure. Now we are discussing as per the risk profile, whether conservative, moderate and aggressive. And before we proceed further, gentlemen, we have a YouTube channel and a Telegram channel. The links are already given in the chat box. So please do join for any such valuable talks and workshops. Yeah, Jiten, please go ahead. I would like to know more about this moderate and then aggressive also, though I am not an aggressive investor.
Perfectly fine, sir. I'll share the aggressive portfolio also. So यहाँ पे थोड़ा सा exposure equity और equity related instruments में बढ़ा दिया गया. Compared to moderate में which was 50-50, यहाँ पे almost 60-40 हो गया. So 60% money goes into hybrid real estate and equity mutual funds, and the balance 40% is kept in safer instruments like your bonds, debt funds, bank FDs, corporate FDs, and some money into your bank account also, because you can't just swipe the entire money from your saving account and leave nothing for the contingencies. थोड़ा सा पैसा saving account में, बाकी diverted into different instruments, spread into these asset classes. तो अब मैं अगर आपको चारों पोर्टफोलियोज एज बेस्ड, कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव का स्प्लिट बताऊं तो एज बेस्ड में रेशियो था 40-60, 40% इक्विटी. इक्विटी एज इन यू कैन consider that equity, real estate and hybrid. So with equity I mean hybrid, real estate and equity, and the 60% balance goes into debt, which is fixed deposits, bank FDs, corporate FDs and bonds. वही कंजर्वेटिव में रेशियो था 40-60, 40% into equity, 60% into debt. Moderate में हो गया 50-50, and in aggressive it is 60-40. Jitender, I would like to clarify. When you are saying equity may, I mean, it is hybrid all across, right? Hybrid in conservative, hybrid in Sir. moderate, and hybrid in aggressive, right? Right, sir. So hybrid, if I explain what is hybrid, hybrid is a mix of equity and debt mutual fund, जिसमें fund manager जो portfolio बनाता है, जैसे equity mutual fund में वो almost 80 to 100% shares में investment करता है. Hybrid के अंदर he can create a mix of both. थोड़ा debt भी रखेगा, थोड़ा equity भी रखेगा, दोनों का mix बना के portfolio बनाता है. And real estate भी रखेगा. रियल एस्टेट नहीं सर, रियल एस्टेट यहाँ पे हम कंफ्यूज कर रहे हैं. यहाँ पे रियल एस्टेट एज अ सेपरेट एसेट क्लास, बट कैन बी रिप्लेसेबल. जैसे मैं अगर आपको स्टार्टिंग में भी कहा कि मान लीजिए मेरे को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है रियल एस्टेट में, एंड आई गेट अ प्रॉपर्टी विच इज वर्थ से 40 लाख रुपीज, और मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड हूं, तो मैं हाइब्रिड ना करके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दूंगा. सो इट कैन बी ईदर ऑफ द टू, कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ, और कैन बी अ मिक्स. I hope let made me my come in here. Yeah. Let me come in here, sir. What essentially is being suggested, there are three options. One, you can be very conservative. Second, you can be moderate. Third, you can be aggressive. Also, fourth option is that the amount which we intend to invest in mutual funds, a portion of that can be invested in real estate. Okay. Implication being, when you are investing it in real estate, you are not investing that amount in mutual funds. Okay. Okay. What are those real estate options for someone like you? There would be three options which can be suggested. One, you can take a small position of around 20, 25, 30 odd lakhs in a fractional ownership of high rent yielding commercial property. Second, you can put in more money, go for around 40 to 50 lakh rupees and buy a small commercial property or a small residential property. So that is something which can be in lieu as another portfolio design if that suits your preferences. The challenge would be, if you are going there, then as a clear indicate, or rather to say, as what you need to understand is that you should make sure that you do not need that money, the entire money, for at least a period of 10 odd years, by which your real estate investment will be mature and you can then withdraw if you need to. Meanwhile, you will continue to get your rental incomes from the real estate investment, because whatever you buy here or whatever you invest at your age would be a ready to occupy, a ready asset which can start fetching you immediate rental returns. So that's how it can be designed as an additional portfolio. So there are, what I'm trying to say, you can have some more options here in terms of having some options, not just in debt mutual funds and equity mutual funds, but a part of your entire portfolio, the 1 CR which you want to invest, a part of it, anything from 20 to 40 lakh rupees,
depending on your preferences, depending on your liquidity requirements, and depending on how you are going to generate further cash flows, can be invested into real estate. ओके मैं If you मेरे wish पास to. काफी सारे क्वेश्चंस हैं आप दोनों के लिए मतलब मैं आई विल आस्क देम लेटर तो अभी हम आगे चलते हैं So basically sir ये सारा portfolio mix बनाने का objective ये है कि we open up options for you. So since you have a substantial amount of corpus which is your retiral corpus, so you'll not be interested in investing it into a single asset class कि मैं सारा पैसा उठा के नहीं तो बैंक में डाल दूं या real estate Right. में डाल दूं या mutual fund में डाल दूं. So we are kind of creating a portfolio mix for you which can be a very meaningful long-term investment wherein you have all the different flavors of the investments starting from a bank FD which gives you lower returns but safety of principal, then going up to an equity mutual fund or a real estate which can fetch you returns higher than maybe 15, 16, 17% also in long run. तो सब कुछ एक जगह ना इन्वेस्ट करते हुए डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करके यू कैन क्रिएट अ बेटर पोर्टफोलियो एंड यू कैन हेज योर रिस्क ऑल्सो. तो अगर मान लीजिए आपने सारा पैसा इक्विटी में डाल दिया या सारा पैसा बैंक एफडी में डाल दिया तो दोनों ही चीजें आपके फेवर में काम नहीं करेंगी क्योंकि एक जगह आपका रिटर्न सेक्रीफाइस हो जाएगा, दूसरी जगह बहुत एग्रेसिव होने की वजह से हो सकता है आप उसको सस्टेन ही ना कर पाए बहुत लंबे टाइम तक. सो सस्टेन करना पोर्टफोलियो को भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको मैं ना सिनेरियो से समझाऊंगा. आई हैव अ सिनेरियो रन विद मी. So we'll do a scenario run for you at your age till the age of 85 years. If you Okay. permit me, I can share that sheet also. Yeah, sure. So and I'll try and explain this as simply as possible. So यहाँ पे assumption ये है कि हम लोग आपके younger child की marriage का provision करने के बाद तकरीबन 80 लाख रुपए की investment कर रहे हैं. I hope this sheet is visible or do you want me to increase the size? Yeah, you can increase the size, I think. Okay. So at 55 एज जैसे आपने बताया मैंने खर्चे थोड़े से कम ले रखे हैं. मैंने तकरीबन लाख रुपए महीने का खर्चा लिया है जबकि आपने मुझे 1.3 दिया है. आई कैन चेंज दैट एक्सपेंस आल्सो. सो इफ यू वांट आई कैन चेंज दिस नंबर. Right. सो आई विल मेक इट 1.3. ओके. सो ये जो पहला सेक्शन आप देख रहे हैं दिस इज योर एज स्टार्टिंग फ्रॉम एज 55 सिंस वी विल बी इन्वेस्टिंग ASAP. This is your annual expense. So 1.3 multiplied by 12 increasing at 7%. So you'll see an increase of 7% every year. So ये महंगाई की वजह से ये खर्चे बढ़ते रहेंगे हर साल. Okay. ये आपकी पेंशन है ना. आई एम अज्यूमिंग आपको तकरीबन सब कुछ कट कटा के 70 to 75,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा. मैंने 70 लिया है यहाँ पर. Okay, ठीक है because ठीक है 70 तो मिलेगा ही. हाँ In any कम्यूट case. करा लेंगे तो कम्यूट करा के वो आई थिंक 70-73 के आसपास कुछ निकल कर आता है. तो दिस ऑल्सो विल इंक्रीज एट अराउंड लाइक 3%, 3% के आसपास. इसमें भी DA वगैरह बढ़ता है हर साल तो उसको भी थोड़ा मतलब नॉट एग्जैक्टली एज पर द इन्फ्लेशन बट दिस देयर वुड बी सम इंक्रीमेंट इनटू दिस. अब ये जो 80 लाख का हमने कॉर्पस इन्वेस्ट किया और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम मॉडरेट पोर्टफोलियो में जाते हैं विच गिव्स अस 10% रिटर्न्स. आई टेक यू बैक टू द पोर्टफोलियो मिक्स. यहाँ तकरीबन 11.5 आ रहा था. मैं फिर भी इसको डिस्काउंट करके और कंजर्वेटिव करके 10% पे ले गया हूँ कि अगर 10% से मेरा पोर्टफोलियो बढ़ता है. सो दिस इज व्हाट यू सी एज द इंक्रीमेंट इन द पोर्टफोलियो वैल्यू. आई होप दिस Okay. इज क्लियर सर. Okay. तो मैं फिर से क्लियर करता हूँ. ये आपके साल के खर्चे हो गए विच इज 1.3 लाख रुपीज पर मंथ. अप्रोक्सीमेटली 15 लाख रुपए 15,60,000 रुपए से स्टार्ट करके 7% से इसको इन्फ्लेट किया है मतलब महंगा किया है हर साल. तो ये आपके खर्चे बढ़ रहे हैं हर साल. ये आपकी पेंशन हो गई जो कि 3% से इंक्रीज हो रही है DA की वजह से. और ये आपका रिटायरमेंट कॉर्पस है जो आपने 10% का रेट ऑफ रिटर्न टारगेट करते हुए इन्वेस्ट किया है तो ये इसका इंक्रीज है. ये डिफरेंशियल जो आप नंबर देख रहे हैं आपका पोर्टफोलियो में इंक्रीज है. तो जो 80 लाख रुपए आपने पहले साल लगाया 10% का रिटर्न आया तो 8 लाख रुपए एडिशन आ गया. अगले साल वो 88 लाख रुपीस भी इन्वेस्टेड है तो उस पे भी 10% आ गया. तो दिस इज कंपाउंडिंग रिटर्न्स ऑन द पोर्टफोलियो. Okay. So this is your total income which includes your pension. Would you be sharing this sheet for me to analyze later? Absolutely sir, I'll do that. Okay. And this is a self-help sheet, so in case if you want to do some scenario runs you just need to change the numbers and it will be done. Yes, sir. I would request that please share it on the Telegram channel so that all the viewers can and all our members who are not here also, Sure. so they can We'll do also that. go through it. Sure sir. सर एक काम यहाँ करते हैं ये
शेयर कर लेंगे, पिछली बार भी शेयर की, जितेंद्र will again share them. And अभी let's move on to question answers and because ये Sure. काफी complicated हो जाएगा otherwise. ओके, Sorry आई for that. थिंक हाँ, आपने आपने काफी सारी चीजें कवर नहीं करी हैं. जैसे व्हाट इफ सम, आई मीन इसमें कुछ वो तो है ही नहीं. सेफ्टी कहाँ है इसमें? कंटिजेंसी प्लानिंग कहाँ है इसमें? कोई कोई कंटिजेंसी प्लानिंग फॉर माय चाइल्ड्स मैरिज इफ समथिंग एल्स हैपेंस इन नेक्स्ट 5 years, कुछ हो गया तो उसके लिए कुछ नहीं किया? सर देखिए, उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है. पहला तो हमने प्रोविजनिंग कर दिया, मैरिज के लिए कॉर्पस ऑलरेडी सेट असाइड कर दिया आपके टोटल रिटायरमेंट फंड में से. दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, बट उसके साथ ना बहुत सारे इफ्स एंड बट्स रहेंगे, बिकॉज एट द एज ऑफ 55 नॉट मेनी कंपनीज वुड बी इंटरेस्टेड टू गिव यू इंश्योरेंस. उसका रीजन क्या होता है कि एक तो मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत बढ़ चुका होता है एट अ हायर एज. तो अच्छा. इतना महंगा होने की वजह से एक तो आपके लिए अफोर्ड करना थोड़ा सा ऐसा होगा कि यार इतना पैसा क्यों दूं मैं इंश्योरेंस के लिए. दूसरा, मेडिकल कहीं ना कहीं कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि इंश्योरेंस मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एट द एज ऑफ 55. कोशिश की जा सकती है, बट देयर कैन बी लिटिल पॉसिबिलिटीज के हो सकता है कंपनी आपको दे ही नहीं. इसीलिए हमने ना वो जो आपने देखा होगा 17 लाख रुपए ऑलरेडी सेट असाइड करके रख लिया था फॉर दी चाइल्ड्स मैरिज, कि अगर इन केस भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बट अगर होता है तो हमने वो प्रोविजन ऑलरेडी सेट असाइड कर दिया था. तो उसके बाद दूसरी चीज ये है कि जो आप कह रहे हैं कंटिजेंसीज और लिक्विडिटी को मीट करने के लिए, तो मैंने सब्सटेंशियल सा पैसा आपका बैंक एफडीज और सेविंग अकाउंट में रखा है. तो अगर ऐसा कोई इमीडिएट नीड आता है जो हमने प्लान और अकाउंट फॉर नहीं किया है, so we can immediately go into and take that money out from these buckets. ओके. तो ऐसा नहीं कि आपका सारा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए या लॉक इन टाइप का हमने अलाइन कर दिया है. देयर सफिशिएंट लिक्विडिटी इन दिस पोर्टफोलियो, ऑल द थ्री. नो बट एक और चीज है, मतलब जो मेरे ख्याल से हमने इसमें केटर फॉर नहीं करी है. अब मैं अगर रिटायर हो गया हूँ तो घर में तो नहीं बैठूंगा ना. हाँ, ऑब्वियसली तो सर. I would work for another 8-10 years at least. जी. तो whether I work or whether I do something of my own, तो कम से कम next 10 years के लिए तो मैं कुछ करूंगा. तो that thing also I think has not been catered for. So that actually works in my favor. Then I get more time to kind of keep this portfolio and sustain it for long, so that higher returns can be targeted. अगर आप मुझसे, मेरे लिए सिनेरियो कब ज्यादा अनफेवरेबल होता है जब आप मुझसे कहते हैं आज पैसा डाल के कल से मुझे रेगुलर इनकम देना शुरू कर दो. So that would be a difficult thing to do, because from day one, no portfolio or portfolio in case it starts giving returns would not give that growth. तो अगर आप 7-8 साल के लिए मुझे कहेंगे कि यार कमिटेड है, आप इसको रखो और इसको ग्रो करो, तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा सिचुएशन है वो. इनफैक्ट इट वर्क्स फॉर माय फेवर. Yeah, I agree. I mean, मेरा कहने का मतलब ये था कि if 1 crore plus तो वैसे हो गया, and बाकी अगर there is some substantial earning, if not substantial, reasonable earning in addition to the income, then that may also be planned for investment for that. Of course, that's you it. can That's it. So in that case, what you can do, since you are saying, let's say you're 55, you'll work for another 10 years, your initial choice can be towards the aggressive portfolio mix, and whatever earnings you generate out of that can be further reinvested, so that when you are 65 and moving towards more senior and super senior category, then you actually have very handsome cash flows to make sure that your life is extremely comfortable. Because what So will happen is, maybe when that scenario comes, I may have to sit down with you again and see how it has to be changed. I mean, as in when I get another job and I start earning, so maybe that thing also have to be. वो कर सकते, उसको भी कर सकते. Right. एक चीज और जो, sorry, please go ahead. नहीं, there was an audience who wanted to ask the question. बताइए सर आप. So another thing which comes to my mind is कि आपने ये बोला कि म्यूचुअल फंड में कर देंगे या कुछ है, इसको एक साथ लमसम में तो करेंगे नहीं. तो हाउ विल इट बी, करना भी नहीं चाहिए लमसम में एकदम, especially with today's market condition, it is going up.
पता नहीं है कब correction may also be there. So how will that be done? Sir, in that case, we'll be using a mechanism called STP, Systematic Transfer Plan, wherein the entire money initially goes into debt funds. So debt fund is an alternate to your fixed deposit, जो एक lower return देता है, but आपकी capital protect करके रखता है. तकरीबन आप ये मान के चलिए कि FD से 1-1.5% ज्यादा रिटर्न आता है डेट फंड्स के अंदर, और वहां से सिस्टमैटिकली वीकली या मंथली बेसिस पे छोटे छोटे ट्रांसफर इक्विटी फंड्स में होते रहते हैं. So over the period of time in smaller tranches, that movement from debt funds to equity would happen. तो उससे बेनिफिट ये होगा कि अगर मार्केट यहाँ से करेक्शन में जाता है तो यू विल बी इन रेगुलर बाइंग मोड. तो यहाँ से मार्केट गिरना हमारे फेवर में काम करेगा, क्योंकि उसी सेम अमाउंट से हम ज्यादा खरीदारी करेंगे. तो जैसे SIP चलता है वैसे ही STP चलता है. SIP आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होता है, STP आपके डेट फंड से डिडक्ट होता है. ओके, सो दैट मीन्स कि मैं जो भी कॉर्पस मैंने म्यूचुअल फंड के लिए एलोकेट कर रखा है वो से 20 लाख, वो 20 लाख जो है मैं डेट फंड में कर दूंगा, और उसमें डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी आई हैव डिसाइडेड उस फ्रीक्वेंसी से वो इन्वेस्ट होता रहेगा ऑटोमेटिकली. जी जी जी. सो दैट आई विल नॉट हैव टू डू एनीथिंग, उसके बाद वो अपने आप होता रहेगा. अपने आप होता रहेगा. और मान लीजिए कोई अगर मेजर करेक्शन या क्रैश दिखता है तो आप उससे सब्सटेंशियल अमाउंट भी स्विच कर सकते हैं. सो जो सिस्टमैटिकली चल रहा है वो तो चल ही रहा है, हर महीने हर हफ्ते जो चल रहा है. मान लीजिए मार्केट ने एक हफ्ते में 5% का ड्रॉप दिखा दिया और आपको लगता है यार ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो आप उसका वेट नहीं करोगे कि मेरी STP लगे. आप 20-25-50 हजार पे इकट्ठा उठा के एक साथ स्विच कर सकते हैं. सो काफी फ्लेक्सिबल मोड है कि क्योंकि आपका ऑलरेडी डेट फंड में पैसा रखा है. सो मूविंग आउट फ्रॉम डेट टू इक्विटी इज वेरी कन्वीनियंट. ओके, सो आई कैन चेंज दैट अमाउंट जो मैंने से नेक्स्ट 3 वीक्स के लिए मैं चेंज कर सकता हूँ कि अभी मेरा इतना जा रहा था, अब इतना जाना चाहिए. वो भी कर सकते हैं आप. बड़े बड़े ट्रेंचेस में भी स्विचेस मार सकते हैं. मान लीजिए आपको लगता है 50,000 की बाइंग करने का सेंस बनता है, या हमने आपको एडवाइस किया कि आज ना सर मार्केट अच्छा करेक्ट हुआ है, 3% 4% गिरा हुआ है, तो आज हम ना 50,000 का बाइंग करते हैं. तो वी कैन स्ट्रेट अवे स्विच फ्रॉम इक्विटी टू डेट टू इक्विटी ऑफ दैट अमाउंट फॉर अ सिंगल ट्रांजेक्शन ओनली. दैट वुड नॉट इम्पैक्ट दी STP. STP जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा. ये एक सिंगल ट्रांजेक्शन अलग से हो जाएगा ओवर एंड अबव. ओके, so what happens when you know अभी हम यंग तो हो नहीं रहे, बूढ़े हो रहे हैं थोड़े बहुत नहीं, वैसे काफी हो रहे हैं धीरे धीरे. तो there will be more helping hands, driver, domestic help, and maybe God forbid nursing etc. उसके लिए क्या होगा मतलब? सर ये जो आपका पोर्टफोलियो डिजाइन किया जा रहा है जिसमें आज हम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोइंग फॉरवर्ड दैट इन्वेस्टमेंट वुड स्टार्ट यील्डिंग यू रिटर्न्स, सो दैट रिटर्न्स वुड सफाइस फॉर द एडिशनल इनकम. सो मान लीजिए आज की डेट में आपने जैसे मुझे कहा 1.3 आपका खर्चा है पर मंथ, आगे चल के 1.3 की जगह 1.6 1.7 हो जाता है, तो जो एडिशनल 30-40,000 है ये कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो से रेगुलर इनकम की फॉर्म में निकलेगा, जो कि या तो डिविडेंड्स की फॉर्म में ले आ जा सकता है. मान लीजिए हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी फंड्स में विच आर डिविडेंड यील्डिंग, so some money coming as dividend income, some money coming as withdrawals from these equity mutual funds through systematic withdrawal plans. So the idea is to create a corpus which can fill this gap. So some money coming from a pension, some from your other investment, and some from this portfolio, so that the total income can suffice for the higher expenses. Let me also add on here, sir. One, you are 55 now. Your pension commuting will end when you are 70, which will give you an additional increase in your. Vipul, that was my next question. Actually, वो भी था कि 15 years में वो commuted amount will also be restored. हाँ. So मैं वही आ रहा था. When you are planning with us at 55, we would typically plan it for next 30-35 years of age, and we understand the fact that with age your dependence on other people increases. Implication that you'll have to buy those services or that labor. You'll have to buy the services of a nurse. You'll probably need more domestic help because it is not just you and your spouse. Both are aging with time, and you know your medical expenses will go up. Your day-to-day movement, so probably you'll need a driver also. Right now you're able to drive by yourself. So given all those things, the portfolio would be designed in a way
that with age you get more cash flows in your monthly account without impacting your capital base or without impacting your asset base. That's how it would be designed. Okay. Okay. So the And scenario what, run with and Jitender not has only, precisely that. yeah, I mean, there are other expenditures also. There will be grandkids and additional medical, geriatric care, and all those things. So it's going to increase only. तो सर वो सब चीजों को, it is not just inflation which one has catered into. It would be inflation, those kind of expenses, like grandkids, जिनके लिए you would like to spend some money, and I mean then your additional expenses of medical, geriatric care, senior living, उस सबके हिसाब से जो एक पोर्टफोलियो डिजाइन होगा वो इस तरह से होगा कि आपका प्रिंसिपल जो है वो इन्वेस्टेड रहे, उसके अंदर किसी तरह का डेंट ना हो, और आपको हर महीने जो इनकम्स हैं दे कंटिन्यू टू इंक्रीज. एक मेरा हर महीने ईयर ऑन ईयर देयर बी एन इंक्रीज देयर. एक मेरा बहुत बड़ा कंसर्न है, कंसर्न नहीं है, इनफैक्ट इट्स अ रेड अलर्ट काइंड ऑफ अ थिंग, कि हर जगह तो यही बोला जाता है, मतलब मैंने तो अभी तक यही पढ़ा है, सुना है, और यही सुनते सुनते मैं बड़ा भी हूं कि जो बाकी सारे फाइनेंशियल प्लानर्स बोलते हैं कि रियल एस्टेट इज बैड. ठीक है, या रियल एस्टेट जो है इलिक्विड है, इट्स नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट. एंड यू, आई मीन आजकल की डेट में लोग यही बोलते हैं, एंड यू आर सजेस्टिंग रियल एस्टेट. तो मतलब मैं अभी, मेरे पास ऐसा है ना विपुल, सिंपल सी बात है, अभी मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरे पास 1 करोड़ का कॉर्पस है. ठीक है, हर एक आदमी जो है, जो म्यूचुअल फंड वाला है वो म्यूचुअल फंड में दिलवाना चाहता है, इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस में करवाना चाहता है, रियल एस्टेट वाला रियल एस्टेट में कराना चाहता है. आप क्या मुझे सही बात बताएं? Okay, sir, since real estate is my area of specialization, I'll answer this. Real estate is a good asset if done correctly, done properly. Problem is, अगर आप गलत कोई प्रोजेक्ट खरीद लें, बन ही नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम है. दूसरा, अगर कोई स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करी है, वो 12% अश्योर्ड रिटर्न टाइप, या किसी ने आपको बायबैक्स प्रॉमिस कर दिए, या सबवेंशन एंड ऑल, देन इट इज अ प्रॉब्लम. या अगर कोई बहुत ओवर प्राइस्ड हाइप काइंड ऑफ प्रॉपर्टी खरीदा तो प्रॉब्लम. बट ड्यू डिलिजेंस करेंगे तो रियल एस्टेट बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है. लेकिन यू शुड नॉट बाय, वन, इफ यू डू नॉट नो हाउ टू डू योर ड्यू डिलिजेंस. टू, डोंट बाय रियल एस्टेट ऑन अ हंच. थ्री, प्लीज डू नॉट बाय रियल एस्टेट फॉर ट्रेडिंग या क्विक टर्न अराउंड, कि बस आज लगा दो और 1 साल में आपको कोई आके बोलता है कि देखो वहां 6 महीने में प्राइस बढ़ गया. आप डोंट, रियल एस्टेट इज नॉट फॉर ट्रेडिंग, आप ट्रेड मत कीजिए. सो स्पेकुलेट मत करें, आप रियल एस्टेट में पैसा कमा लें. एल्स स्टे अवे, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम रियल एस्टेट. हमारा रियल एस्टेट, जितेंद्र तो आपको म्यूचुअल फंड बता रहा है. इन आर ऑर्गेनाइजेशन वी आर एसेट न्यूट्रल. हम आपको हर चीज के प्लस माइनस बताते हैं, चॉइस आपकी है, आपको जो सूटेबल है. आपको रियल एस्टेट नहीं सूट करता है, प्लीज स्टे अवे एंड यू कैन स्टे टू द मोर रेगुलेटेड एंड कंपैरेटिवली इजियर ऑप्शंस लाइक म्यूचुअल फंड्स. वो आपको सूट करता है, वहां है. बट मैं आपको 2 चीज यहाँ पर, आई विल मेक अ स्मॉल प्रेजेंटेशन है, कुछ 2 हैंडरिटन नोट्स जस्ट फॉर इफ इट इज अलाउइंग मी टू, माय सिस्टम इज नॉट मतलब अलाउइंग आपको, मी टू. you anticipated this, huh? As in, sir? मैंने कहा you anticipated this. आप पहले भी लोगों ने आपको ये चीज पूछी हुई है, इसका मतलब. नहीं सर, मैं तो आपसे सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जैसे एक हमने पीछे अभी रिसेंटली डन अ टॉक ऑन फ्रैक्शनल ओनरशिप. वहां पे आप स्टार्टिंग फ्रॉम 5 to 10 लाख रुपीज कैन इन्वेस्ट इन अ रेडी टू मूव रेंट यील्डिंग कमर्शियल रियल एस्टेट. उसके आपको बेनिफिट्स क्या है? पहले तो डिसएडवांटेज क्या है सर, अगर आपने उसमें 20 लाख रुपया लगाया तो आप प्लीज करके उस 20 लाख रुपए की कोई प्लानिंग अगले 10 साल मत कीजिएगा कि मुझे ये पैसा उससे निकालना पड़ सकता है. सो दैट इज द बेसिक डिसएडवांटेज. सेकंड रिस्क, अगर वो टेनेंट वहां पर खाली कर जाता है तो यस, यू डू हैव अ रिस्क कि आपको
4-6-8 महीने का रेंटल लॉस हो सकता है. अदर देन दैट यू गेट अ स्टडी इनकम विच इज एज गुड एज एनी डेट इन्वेस्टमेंट यू मेक. आप किसी भी डेट फंड में डालेंगे उस तरह का रेंटल इनकम मिलेगा. सेकंड, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी वैसे वैसे डेट के अंदर जो रिटर्न्स हैं वो रिड्यूस होंगे बिकॉज इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं. But rentals will continue to rise every 3 to 4 years in commercial properties, every 1 to 2 years in residential properties. So आपको दूसरा फायदा ये कि आपका रेंट बढ़ रहा है. तीसरा, you will have a capital appreciation there. So these are the advantages. Safety is ensured by the fact that those are all ready investments, तैयार properties है. तो आपके साथ में उस तरह का कोई फ्रॉड या डॉक्यूमेंट्री को प्रॉब्लम नहीं होगी. और additionally there are strong documentations which we do to help you. And it is Right. just a suggestion sir. आपको नहीं समझ आता है मत कीजिए. देखिए it's like there are a lot of people who are vegetarian. It's their choice. There are a lot of people who are non-vegetarian. It's their choice. Our job is to tell you the plus and minus. You can decide what is best for you. जो मैं है आपको उसमें ये अश्योर कर सकते हैं. We will not tell you something which is not there and we will not hide anything. So you are right. रियल एस्टेट में आप जो भी पैसा लगाएं आप उसे 10 साल तक निकालने के हिसाब से ना लगाएं. अगर आप अपने बेटे की 4 साल बाद शादी करना चाहते हैं और आप बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट में लगा दें 4 साल में मेरे को आप इसका डबल कर देना, मत लगाइए सर. प्लीज मत लगाइए. आई डोंट वांट टू मेक दैट काइंड ऑफ अ प्रॉमिस. Thank you, Vipul. I think we will consult this, and I will also see that fractional ownership video also. You can you put the link in the chat box for that, in case you can. Sir, let me see if I can. Okay, no worries. You can put it in the Telegram channel then. हाँ मैं बात कर दूंगा सर. अदरवाइज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे एनेबल टू शेयर. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है जो अभी पूरे कंसर्न मेरे वो नहीं हुए एड्रेस. जितेंद्र, बाकी सब फाइनेंशियल प्लानर्स जो हैं, इनफैक्ट मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही मैसेज आया था. देयर इज अनदर दिस थिंग फाइनेंशियल प्लानर, वेल नोन वन. ठीक है. Which is, I mean, they are promising, most of them are promising 20% returns. आपने मेरे को रिटर्न दिया एक कैपिटल as per the age 10.3%, then 9.7%. फिर आपने 3 कैटेगरी अगर रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से दिया है. इफ आई एम मॉडरेट, कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड एग्रेसिव में, उनमें भी nowhere you touch 20%. सर So उसका क्या वो है? सर बेसिकली देखिए, प्रॉमिस करने के लिए तो लोग बिजनेस के लिए कुछ भी प्रॉमिस कर सकते हैं, बट डिलीवर कितने लोग क्या करते हैं उस पर मैटर करता है. मुझे आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है एक आपके हिसाब से कस्टमाइज करके इन्वेस्ट कराना है. ऐसा नहीं कि मुझे आपको लालच दे के इन्वेस्टमेंट करानी है. सो जो 20%, 30%, 35% का नंबर कोट करते हैं मार्केट के अंदर एज अ फाइनेंशियल प्लानर और एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, दे आर जस्ट ट्राइंग टू ल्यूट दी क्लाइंट के भाई मैं आपको ना ये बड़ा रिटर्न प्रॉमिस कर देता हूँ, होगा नहीं होगा वो बात की बात है. बिकॉज रिटर्न कोई गारंटी नहीं कर सकता, रिटर्न में कोई नहीं देगा आपको. एक्चुअल में अगर आप देखें ना, पोर्टफोलियो अगर एक मीनिंगफुल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाया जाए जिसमें मिक्स ऑफ ऑल दी एसेट क्लासेस हो, तो रिटर्न कहीं ना कहीं इसी रेंज में रहता है, 10 से 15% के बीच में. उससे ऊपर जो भी कमिट करने की कोशिश कर रहा है वो सिर्फ धोखा देने की कोशिश कर रहा है. कहीं ना कहीं हम उसी ग्रीड में आके उनके साथ काम कर लेते हैं और बाद में फिर हमने देखा है किस तरीके के नुकसान होते हैं. मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी देखी गई है मार्केट के अंदर, कमिट की जाती हैं, डिलीवर नहीं की जाती हैं, और उसके बाद वी फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स आगे चल के. तो मैं आपको वही कमिट करूंगा जो मैं डिलीवर कर सकता हूँ. कोशिश करूंगा कि मैं आपको कमिट कम करूं और डिलीवर ज्यादा करूं. मैं वो ज्यादा अच्छी सिचुएशन में होऊंगा कि मैं आपको 10% कमिट करूं और 15% डिलीवर कर दूं, रादर देन मैं आपको 20% कमिट करूं और डिलीवर सिर्फ 10% करूं. दैट्स नॉट द वे आई वर्क. तो हम लोग जो कमिट करते हैं कोशिश करते हैं उसको डिलीवर भी करें. आपके साथ मेरा रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म तो होना नहीं है कि मैंने आज आपकी इन्वेस्टमेंट करा दी और कल मैं गायब हो जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. आई हैव टू वर्क विद यू
till the time you are there, I am there. So another like say 15, 20, 25 years. For that, I can just not commit you anything false. ऐसे ही कि मतलब कुछ भी हवा में बोल दिया 20% का रिटर्न दे दूंगा, जबकि रिटर्न किसी के भी हाथ में नहीं है. The only thing which I can commit you that I'll follow the process, I'll follow the guidelines, and return is secondary. अगर आपने प्रोसेस फॉलो किया है, इन्वेस्टमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो किया, तो रिटर्न तो सेकेंडरी आएगा ही आएगा. कहाँ जाएगा रिटर्न? Okay, I appreciate your forthrightness. मैं एक बात और ऐड कर देता हूँ सर, between you and me we are फौजीज. So आपको जो 20% रिटर्न देता है सर, वो काफी काबिल आदमी है. हमारी स्पेकुलेशन करने की काबिलियत बहुत कम है. We are not able to speculate. So we have a very simple rule. The first rule is safety of the principal invested, and the second rule is refer to rule 1. Do target a return which will provide handsome returns. I'm not saying कि बैंक रिटर्न ले 4-5%, बट सर 20-21% का रिटर्न सस्टेनेबल नहीं है. आप अपनी गाड़ी 40 किलोमीटर पे चलाएंगे, बहुत स्लो हो जाएगा, आप शायद अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे. लेकिन 100+ पर कंटिन्यूस चलाना, हो सकता है किसी में इतनी, किसी ड्राइवर में इतनी काबिलियत हो. वी आर एबल टू डू इट एट 70-75 with very less hassles, very low risk of accident, and taking you where you want to in the right amount of time. Point taken, Vipul. You gotta focus on your